And I started coming to the office at the age of 15. What was there in India? Nothing. Nothing means nothing. तो ऑलमोस्ट 3 से 4 डेकेड्स पहले आपने सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ. हाँ. अब मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया नहीं था. बस सर में एक जुनून चढ़ता है ना, बस जुनून था. तो आपको क्या लगता है जैसे हमारी जनरेशन जो मेरी एज के बच्चे हैं वो अपने चीज़ों में ऐसे एथिक्स कैसे लाए? देखो, एथिक्स लाना है तो अपने हाथ में है. हाँ. और उस समय people were not after money. Of course they were after money, but not in a bad way. किसी का गला घोट के काम नहीं करते थे. The young generation is more towards brands, and unfortunately youngsters don't understand the value of money. Hey Achievers, welcome back to Genflation, the next gen narrative. I am your host Kushagra, and Genflation is here to educate, elevate and genflate your career graphs. Today we have an incredible guest, Mr. Suresh Kumar Poddar, who is truly an animal lover. He manufactures artificial leather to make a happy place for animals and us. So how are you, sir? How are you today? I'm fine. So can you tell us about your journey and how did you get into manufacturing artificial and synthetic leather? You see, our family used to live in Calcutta from 1940s. And we were joint family. My father started a synthetic leather, artificial leather, you can say. Got a distributorship for one big company that time in Bombay. This I'm talking 1962. That was Elphiston Leather, Elphiston Spinning and Weaving Mills. And I was that time quite young. I just passed the, higher secondary and joined science. So in the morning I used to go from my house to my college. College used to finish at 11:30. From there I used to come to my father's shop office and just to learn what kind of a business is this and just to help them. At that time, my job was only to deliver the material to the different customers, take the payments. So that's how, I got in touch with all the artificial leather sellers, distributors, dealers. So I had good idea about what is artificial leather, how it is sold, what are the areas. So in 1968, my father and uncle decided to close the factory, to close the office. Because that time the competition started too big and they were not able to make it. So in Elphiston Mills, there was one R&D person, Mr. Chauhan. In every factory, there is a R&D person. Okay. In real sense, R&D takes the company on the top. Because if you want to make money, you have to make new products. That's right. How do you make good new products? You have to have a strong R&D team. So because we were supplying that time, when he was in Elphiston Mills, to Hindustan Motor and Bata. These two were the biggest company in India that time in Calcutta. Bata was number one in footwear. Nobody was even close to them little.
Hindustan Motor was only company, and then another company was Fiat, which was manufactured in Bombay. So I had a good relation with the people of these two companies. So he asked me, Suresh, do you want to take a distributorship of this company? I said, sorry, I have no money. Because for distributorship, you need money to keep stock, to sell the material in credit. I have no money because I was in the college that time. So I said, but I can sell your material to Bata and Hindustan Motor. So if you think I can become a commission agent for selling to these two companies, he said, okay. So he took me there to Bombay from Calcutta to introduce the new company owner. His name was Kantibai. And the company's name was National Leather Cloth Manufacturing Company. They were not very new, but they were good. They have a, respectable, products in the market. So I went to his owner and he saw me. That time I was very lean and thin. He said, whom you have brought here? Now Bata is a totally, foreign company. Those days in all the top position in Batas were foreigners, no Indians. Up to purchase manager, Indians. Every area there was, foreigners. And then Hindustan Motor was also Birla's company. Birla were in top that time in India. So they say, how the hell he can talk to those guys and get me the business? I said, don't worry, test me, then you decide. So, but Mr. Chauhan, he knew me because in Elphiston he was the R&D manager. Then he shifted to National Leather Cloth. So we were with him myself was close with him for 4 years. So everywhere, whenever we go to a big company, I used to take him. So he knew that what I am. So he said, that fellow's name was Kantibai, the owner of the company. He said, Kantibai, you just see, you start work. That time there was one company name was Mayur Industries Limited in synthetic leather. And they were the number one company. And Bata, Hindustan Motor, all were buying from them. And when you are very popular, even Bata company's commercial manager has to sit down to wait for their, manufacturing head to talk to them and to talk about business. And their supply was very erratic, that I knew. I mean, Bata has a system, during those days, I'm talking 60s, that there has to be a system and standardization of all the raw material. I mean, suppose X raw material, they fix 60 days stock. It cannot be allowed to 61 days. And that is the responsibility of the purchase department. And those days, these poor industries, their supply was so erratic, so they have to keep 90 days stock, for which they were very, disturbed. And purchase managers has always a problem. They will never get reply. And during those days, there were no mobile or internet or anything. You have to talk over telephone, and even urgent call used to take 8 hours, 10 hours
12 hours. Okay. And the only way was telegraph. You send the telegraph, I want so and so, and that used to reach very fast. So I understood what is the problem of the butters. So what I started doing, I got first approval of this National Leather Cloth Manufacturing Company, because all these big companies, they just like that, they don't give you the order. First you have to register yourself. The product which they buy, you have to get it approved. Then only you can start working. Okay. So first I did that and got approval of all the articles which they were buying. So I understood. You see, in business, there is two things: identify and satisfy. Okay. Because customer is your God, and customer is never wrong. You cannot say, no, you don't know this. This cannot happen. If you use this kind of word to your customer, he will say, okay, goodbye. So That's right. you have to listen to your customer, Okay. and you have to identify his problem, and then you solve his problem. Then only he will become your customer and may give you some extra money. I knew what is Bata's problem. So, I used to know that what material problem is there, more industry is not supplying. So they just like that, they cannot give order to this company, National Leather Cloth. They have to, in the company also system, that you have to talk to them, you have to write them, you have to send telegram, even that the material is coming late and it is not in the schedule, then you are open to buy from somewhere else. So when in the last moment, they used to call me, Mr. Poddar, this is the problem, get me this material. So those days, from Calcutta, I didn't have too much money. I used to travel for Calcutta to Bombay in 3 tier. It used to take 42 hours. When there is a need of material, I will call them and tell them, okay, you prepare this material, without order even. I used to go there, in 42 hours I reach there. Next day, I load the material in the train, because in every passenger train, there is 1 or 2 bogies which is for goods, right? Yeah. So that reach faster, because otherwise goods train takes 7 days, 10 days, 12 days. Of course, you have to pay a little more money. So I used to again go back to the train with loaded material, get down in Calcutta, take the delivery of that material and supplies to Batas. Means during those days, if they placed me order on day 1, on 4th day, material used to be in their godown. So they were just surprised. I mean, the material for which they have to keep 90 days, and they are getting so fast. Naturally, this company's name, National Leather Cloth, become popular, that, their supply is very good and all that. You will not believe, our industry was the 100% supplier to these two companies. And within 2 years, they were zero. Everything was supplied by National Leather Cloth through me. And they were big. They were not bothering for the business. So they couldn't understood that the business is going down. If you have got 100 parties, if 2 parties' business is going down, nobody bothers it, or nobody look it into the deep.
So you were a commission agent at that time for Yes, National yes. Leather. Commission agent. Okay. I used to sell their material. You can say sales agent. So you were a commission agent, so you used to get commission for supplying leather to them. Yes. Material used to supply by them directly in the company's name. Company used to pay them directly. In between, whatever sales were there, I used to get 3% commission that time. So you were a first generation entrepreneur of your family? No. We had got I have 5 brothers. Okay. My uncle has got 3 boys, male member. So we are 8 male members Okay. in the family. So everybody was in that position. My eldest brother was very elder, 10 to 12 years elder than me. He used to do his own trading business. So like that, but in this business, I was the only person who was involved. Otherwise, all my brothers were doing different kind of things. Okay. Trading business, all trading business. And what was your age at that time? That time my age was 68, 22 years. 22 years. You did such a big initiative in just Yes. 22 years. And I started coming to the office at the age of 15. I passed my higher secondary when I was just 16 years old, 15 years old. So बहुत फास्ट हमने मतलब स्कूलिंग की थी. ठीक है, इस तरह से बिजनेस चलने लग गया. Then I always used to think of getting a distributorship. You understand, there is a big difference So between. आपको starting से distributorship करनी थी, but you didn't have the money to do it. That's why you became a commission agent. Yes. To gather the money to infuse the capital into getting a distributorship. Yes. तो आपका इसमें क्रक्स ये है कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए जल्दी सो दैट यू कैन बिल्ड अ कैपिटल कि आपको जो एक्चुअली काम करना है उसके लिए आप कर सको. तो वो तो ठीक है ना, तो उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहता था मैं. हाँ वही. वो देना नहीं चाहते थे. I was very close to owner. Okay. Very close. Okay. But he always used to say, Suresh, where you have got money. Yeah. Distributorship cannot be done like that. You have to have capital. Yeah. And I used to tell them, I am Baniya's beta, I will arrange money from anywhere. But he was not getting confidence. Okay. So, okay, I was trying and I was not getting. So, you know, in life, luck also count. One time they have a distributor in Calcutta and he got some material and he couldn't sold. So he sent back the material. And those days, if to manufacture, if you return his product, it's a great prestige issue. क्योंकि उस समय तो तड़पते थे लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए और कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसका माल वापस कर दे और वो भी बिना बोले. So it would be a big prestige issue for the manufacturer. Yes. Luckily that day I was there and I was sitting in the chamber of the owner. I was very close. I used to spend a lot of time in the chamber. Only I was the person whom he used to allow to sit in his chamber. And I've learned a lot from him. So he started getting, he was old man. In his Gujarati language, he is this. से कांति भाई क्या हुआ, आप इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हैं? बोला देख 10 बार पैर रगड़ के गया, तब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर शिप दी और उसको देखो माल वापस कर दिया. उस दिनों में 4% एंट्री टैक्स थी कलकत्ता में. तो मतलब आपने माल भेजा 4% तो लग गया एंट्री टैक्स, जाने का भाड़ा, वापस माल आने का भाड़ा. तो मैंने कहा कांति भाई रुकिए. I just called the transport person.
कि whether that material has left or is still lying in your godown. बोले it's still lying. I said don't send it back. We will take it back. So I went there, took back that material, and I knew the whole market. So in 15 days, 20 days, I sold the material, and whatever money I used to get, I used to send them. So just one day I was sitting, and his CFO came to me and gave me one credit note. You know, so I read that credit note. That was for the material which I took and sold. उस मटेरियल का उन्होंने मुझे 3% के हिसाब से क्रेडिट नोट दिया. तो मैंने कांति भाई नाम था उनका. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्रेडिट नोट बिकॉज यू हैड अ प्रॉब्लम, सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम. दिस आई हैव नॉट सोल्ड, आई मीन डिडंट bought the material, so I don't deserve it. बोला नो. उस समय के लोग बड़े ये होते थे. बोला यार, हाँ, बोले तुमने माल लिया, 10 जगह बेचा, उनको माल बेचने के लिए गए, पेमेंट लाने गए, इतना मेहनत किया. मैंने कहा कांति भाई आप ट्रबल में थे, मैंने कर दिया, इसमें कौन सा एहसान कर दिया. पता नहीं उस समय क्या मेरे मन में आया. बोला अगर आप मेरे को ऑब्लाइज करना चाहते हैं तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप दीजिए. आई डोंट वांट दिस कमीशन. तो पता नहीं उनके क्या मन में आया उस दिन. उस CFO वहीं खड़ा था. उसको बोला अच्छा इसको थोड़ा थोड़ा माल देना शुरू करो. So that's how it has started. सो सर, जैसे उस टाइम के लोगों में ऐसे बिजनेस एथिक्स थे, तो आपको क्या लगता है जैसे हमारी जनरेशन जो मेरी एज के बच्चे हैं वो अपने चीज़ों में ऐसे एथिक्स कैसे लाए? देखो एथिक्स लाना तो अपने हाथ में है. हाँ. और उस समय दुनिया एकदम डिफरेंट थी. आज डिफरेंट हो गई. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन दोज डेज एंड nowadays. People were not after money. Of course they were after money, but not in a bad way. अच्छे तरीके से काम करते थे. किसी का गला घोट के काम नहीं करते थे. तो इसलिए एथिक्स था. हाँ. फिर चालू कर दिया मैंने माल मंगाना. और पैसा तो था नहीं मेरे पास. Then what to do? My problem was that I have to satisfy him that I am capable of paying his money. तो मैं क्या करता मालूम है? जैसे माल आने वाला है, उन दिनों में 10 दिन लगता था बॉम्बे से आने में. और मैं फ़ोन पे खबर ले लेता था क्या क्या माल जा रहा है. And I used to go to the market and try to sell the material. Even before it comes. Yes. By the time material used to come, I'm sold off. So, I was saving the time. भाई एक तो माल पहुंच गया, उसके बाद आप मार्केटिंग करने पहुंचते हो. और मैं पता कर लेता था क्या माल आ रहा है और उसके सैंपल लेके बाजार में जाके ऑर्डर बुक कर लेता. ठीक, आपने ऑर्डर भी बुक कर लिया, पेमेंट. अरे भाई if market term is 45 days or 60 days, why he will pay me cash? Just think. Yes. So what I used to do? I used to sell with 0.5%, 1% margin of my lending cost to them. But I say I want cash payment. So that time in my mind, it was necessary to satisfy the owner that yes, I am capable of paying you the money. सर, जैसे आपने जो किया इसको मॉडर्न डे में ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं. जो आप मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने किसी से ऑनलाइन माल ख़रीदा
और ऑनलाइन किसी को बेच दिया और आपका कुछ है ही नहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट, आप बस बीच में कट ले लेते हो, उसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं, और आपने इस बारे में इतने सालों पहले सोचा, तो आप सच में ये कितने तो आज शुरू हुआ है यार, हाँ ये आज उस शुरू है। टाइम में थोड़ी था ऐसा। आप कितने विजनरी होंगे ये सब ये सोचने के लिए। जो भी है तो ठीक है, शुरू किया। और मेरा पेमेंट माल पहुंचने के 10वें दिन के अंदर सारा पेमेंट क्लियर हो जाता था। एंड देन आई बिकम द बेस्ट पे मास्टर इन इंडिया इन दैट कंपनीज बुक्स। तो मेरा तो ध्येय था कि उनको सेटिस्फाई करना है, नहीं तो मेरे को माल कैसे देंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे सप्लाई बढ़ानी शुरू कर दी, फिर धीरे धीरे गाड़ी चल जाती है, इनकम होने लगी, उससे भी मनी जनरेट होने लग गई। और ये नहीं था कि मैं बहुत कंट्रोल में चलता था, ये नहीं कि पैसा आने लग गया तो उसमें खर्च कर दो, एक धेला नहीं खर्च करता था, क्योंकि मुझे उस समय कैपिटल की ज़रूरत थी। तो कैसे करोगे भैया कैपिटल, अगर जो पैसा कमाओगे वो फूंक दोगे तो कंपनी में से तो कैपिटल कम हो जाएगी ना। तो मैं कुछ प्रॉफिट नहीं उठाता था, तो धीरे धीरे काम चल गया। उसके बाद क्या हुआ, चूँकि मैं पेमेंट इमीडिएट करता था, तो वेन एवर एनी न्यू प्रोडक्ट यूज टू कम, आई वॉज द फर्स्ट टू आस्क, पोद्दार साहब ये मटेरियल आ रहा है, आपको लेना है क्या। उन दिनों में ये रेनी सीज़न के टाइम, मई जून जुलाई अगस्त, द मार्केट इज जनरली डाउन. In rainy season, market goes down. In those days, factories used to have problem. They have to sell their material. They cannot stop production. They cannot keep stocks. So that time they used to give discount offers. So I used to take advantage of that discounts also. And then because I was paying like this, I used to get 2% cash discount. सपोज 100 रुपये में माल खरीद रहे हैं, तो मैं जो माल खरीदता था उसमें 2% मेरे को कैश डिस्काउंट मिलता था, बिकॉज आई यूज टू पे इन 10 days. ओके. एंड व्हेन दे वांट टू पुश ऑफ द मटेरियल, तो उनको तो कुछ ना कुछ एडवांटेज देना ही पड़ता है ना, तो वो एडवांटेज मिलता था। ऐसे करते करते गाड़ी चलने लगी। अच्छा. सो सर आप मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आए? This is also a big story, you know. I always used to look forward to get something new. You see, if the usual products you sell, you don't get a premium. You have to show something different to your customer, which is not produced by others. As you said, R&D is very important. Yes. So, but you know, I used to go to foreign a lot. Whenever there is any exhibition of footwear or leather cloth, synthetic leather, I used to go to Europe, mainly Europe. At that time, as a trader, I used to go. And those days, even manufacturers were not going. Okay. So, because I had excitement all the time to see something new, what is happening. So I used to go there, and sometime I used to pick up if I find something different, and used to go to this national leather cloth and tell them, sir, can you make this? So they were not capable that time to make those things 100%, but 80% we could make. So those products I used to take to the customers, because I knew all the customers who can pay, who cannot pay. So that's where it is started working. मतलब उन दिनों में 1 रुपया मीटर का मार्जिन होता था, और मैं जो प्रोडक्ट बनवाता था, ये स्पेशल प्रोडक्ट, उसमें मैं उस ज़माने में 15-15 रुपये मीटर का मार्जिन करता था. Because the customer whom I am selling, they don't know those kind of material. तो उनको 5-7 रुपये ज़्यादा जो भी पे करते हो दे देते थे. True.
एंड फैक्ट्री से तो जो उनका प्राइस था वो देते थे। तो उससे क्या है कि मेरी मार्जिन बढ़ने लगी। अब मैं हर वक्त मतलब साल में 3 बार तो बाहर जाता ही था उन दिनों में। मैं तुमको 68-70 की बात बता रहा हूँ, 70s की। अच्छा 70s की बात बता रहा हूँ। उस अच्छा समय कोई जाता ही नहीं था बाहर। अच्छा। मैं कम से कम साल में 3 बार जाता था, डिफरेंट डिफरेंट जगह जहाँ एग्जीबिशन लगती थी वहाँ जाता था। तो इस तरह से आई started making the new products all the time. But then what happened? You see, when you start a new product, it's not easy from day one you will start selling the big quantity, you know. You have to give some time. It takes time. 2 months, 3 months, 4 months, 6 months, 1 year to catch that material in the market. So what I used to see when the product is well accepted, the quantity is increasing, my orders are increasing, other distributors of other parts, because I was the distributor for West Bengal. अभी दिल्ली के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बॉम्बे के भी हैं, गुजरात के भी हैं। जब उन लोगों को पता लगता तो वो फैक्ट्री वालों के पास जाते हैं, अपनी फैक्ट्री के पास, एंड दे यूज्ड टू टेल देम ओके आई विल पे यू 2 रुपीज़ मोर। तो फैक्ट्री वाले दे देते थे उनको, हाँ मतलब चुपचाप से। तो मैंने देखा यार ये तो बड़ा अजीब काम है, सारा गधा पचीसी मैं करूं, माथा फोड़ी मैं करूं, पैसा मैं बर्बाद करूं, और जब उसको ग्रेस्प करने के टाइम आए तो ये झमेला हो जाए। तो चलता रहा। फिर मेरे को ये बात बता रहा हूँ 84-85 के आसपास मैंने कहा यार अपने को खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और मेरा बिजनेस खराब करते हैं। तो मेरे उस समय से ही दिमाग में आ गया कि क्योंकि मैं आई यूज्ड टू विजिट द होल वर्ल्ड, सो आई यूज्ड टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन 80s, व्हाट वाज देयर इन इंडिया। नथिंग मीन्स नथिंग। तो ऑलमोस्ट 3 से 4 डेकेड्स पहले आपने सोचा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। हाँ, और मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया नहीं था उस, बस सर में एक जुनून चढ़ता है ना, बस जुनून था कि करना है। तो जैसे आपने B2B मैन्युफैक्चरिंग तो आप 30 से 40 साल से कर ही रहे हो, तो आपने कभी सोचा है कि D2C सीधा कंज्यूमर को बेचने का, या फिर कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैंने अभी स्टार्ट किया 1 साल पहले। अच्छा आपने I have already started. Oh, you have already started that. Because you see, in our business, Yes. like artificial leather is used in making of footwear, car seat covers, Okay. furnishings, bags, garments. So who will buy my product? Those who are manufacturing these products Yeah. and selling in the market. Yes. I cannot sell those products because I am not expert to sell in the market Yes. for these end products. Finished So goods. finished product. So I always used to think what you are saying. Yaar, our prices are controlled by our buyer. Today if you buy a car and you see, oh, seats are very beautiful, very good. So whom you will praise? The car manufacturer. Yeah. You don't know whose seat is there, Yes. whether Mayur seat is there or somebody else's seat is there. Yeah. So I can't do anything. Yeah, that's You understand? right. In B2B, you can't do anything. Yeah. Like footwear, those who are making footwear and you buy the footwear, do you know, do you ask them कि भाई इसमें सोल किसका लगा हुआ है, अपर मटेरियल किसका लगा हुआ है? You just see the look, you see the quality and you buy. And you praise the company which is making or selling the product. Product, yes. Making and selling. Huh.
So we are just the raw material supplier Yes. to those products Yes. to whom nobody knows who buy. End user don't know. So then I thought, why don't we start this B2C? So now what we have started, you see, if you go to buy furnishing material, जैसे आज आप सोफ़ा खरीदने गए तो आप अपने आर्किटेक्ट को लेके शॉप्स में जाते हो, सोफास देखते हो, उसका मटेरियल देखते हो, and then you say, okay, I want this, I want this. You see, ready-made things, you will buy very less time. For design and all that you can buy. But if you want to have, like this is cloth, Yeah. if you want artificial leather, Yeah. so you will go with your architect, na, he will take you to the different shops Yeah. and say, oh, this material, so you will say, okay, I want this material. Yes. So like that we have started. Now at the moment, we have more than 700 dealers Okay. all over India. We have already made 700 dealers, more than 700 dealers. That means what they do, we keep the stock in our godown. And all these 700 dealers have got our sample book. If you go to the shop, you see one shop cannot have the product, stock the product for hundreds different or 50 different companies. Yes. So what they do? They keep the sample book. Yes. They show you the sample book. And whatever you like, you pick up and tell him. So like that we have our sample books in all these 700 shops or dealers, you can say. Right? Yes. Those who are selling in retail. Okay. So whenever any customer comes, you came, okay, I want this 5 meters. So they will just call us that send me this 5 meters. Okay. So we'll sell them 5 meters. Okay. If somebody want 1 roll, we send 1 roll. Somebody want 10 meters, I send 10 meters. Then we have distributorship. I mean, every state we have 1 or 2 distributors. They buy in bulk and they also made their own dealers, like we made directly. Like our distributors are also making the dealers and company is also making the dealers. So at the moment we are getting good response. Because you see, retail business needs big time. तो सर जैसे अब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही हमारी जनरेशन के होते जा रहे हैं, जनरेशन जी, तो आप उनको क्या समझते हैं, आपकी क्या समझ है उनके बारे में, और आपका ओपिनियन क्या है उनके बारे में? This is a very big question. You see, what I have understood, the young generation Yes. is more towards brands. And when they move with their friends and all that, they will say, oh, what brand of watch you have, what brand of shoes you are having, what brand of dresses you have. That attracts them more. Okay. So nowadays time is for brands. And unfortunately, youngsters don't understand the value of money. You see, just few days back, my grandson was here on holidays. He is in America now, studying. So he came to me one day with a sports shoe. बोला, दादा ये कैसा जूता है? मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है. तो बोला, आप बताइए इसका क्या प्राइस होगा? मैंने कहा, यार बेस्ट से बेस्ट ब्रांड जो इंडिया का है, मुझे नहीं मालूम था वो फॉरेनर का ब्रांड. मैंने कहा 3,000 रुपया समझ लो, द टॉप मोस्ट आइटम. He said, Dadu, please go a little forward. And by that way, he took me to 30,000 rupees. Well, this shoes cost 30,000 rupees. And because I know footwear,
यू शो मी एनी फुटवेयर, आई कैन टेल यू क्या दाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे ही उसने कहा 30,000, मेरे को इतना गुस्सा है, जूता उठा के फेंक दिया। मैंने क्या बकवास कर रहे हो? तो क्या बोलता है मालूम है? उसने मेरे को ब्रांड ला के दिखा दिया। यू सी दिस ब्रांड, द कॉस्ट ऑफ द ब्रांड। I said, do you know about the quality? What is this 30,000 rupees which you are paying? Is it worth that? बोला दादा, there is no quality, there is a brand. तो तुम लोगों का ये हालत है आज के दिन यंगस्टर का. You don't go in the depth. And all these brands, they are not manufacturing themselves, they outsource from different manufacturers. Because their brand is so popular, they are increasing the price. Yeah. And people are mad. It's not that their product is only that great. Of course, it's little better. आज समझो 3,000 का जूता है और वो 30,000 का है, तो 3,000 का नहीं तो 5,000 के लायक तो है. लेकिन आप तो उसका 30,000 दे रहे हो यार, 20,000 दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो. क्योंकि बिकॉज यू आर थिंकिंग ओनली फॉर द ब्रांड. हाँ, बिकॉज लाइक मैन्युफैक्चरर सबका सेम होता है कभी कभी, बट वो ब्रांडिंग चेंज हो जाती है तो प्राइस भी चेंज हो जाता है एकदम. तो अभी मेरा भी मकसद यही है. वाई आई वेंट इन द रिटेल. वंस माई ब्रांड नेम इज फेमस, ऐसे भी वी हैव गुड मार्जिन, बिकॉज इन रिटेल you get better margin. But once in 3-4 years time, it cannot happen in one day. Because the people should know, it should be popular. So first of all, what I am doing, I have target to make 1,000 dealers. 1,000 डीलर बन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करूँगा. अभी हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे. मान लो मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, तुम माल पूछने गए दुकान में, तुमको मिला ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मटेरियल शुड बी इन द मैक्सिमम शॉप्स, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. हाँ, तो अभी यही कर रहे हैं कि 1,000-1,500 डीलर बना के उसके बाद फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना शुरू करेंगे. एंड आई हैव अ गुड होप. सेकेंडली, व्हेन यू गो टू द फर्निशिंग शॉप, you will find sofa set material, you will find curtain material, you will find wallpapers. ये सारी चीज़ें लगती है ना हाउस होल्ड में. सो वी हैव अ फ्यूचर प्लान ऑल्सो टू गो फॉर दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. सो सर, इसमें जैसे ये ब्रांड मेंटालिटी जो हमारी जनरेशन में है, इसका माइंडसेट चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कभी कभी ये हमारे खुद के कंट्रोल, बिकॉज हमारे पीयर प्रेशर इतना होता है और हमारे पीयर्स ये सब कर रहे होते हैं, तो वैसे होता है. तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? माइंडसेट को चेंज होगा नहीं. माइंडसेट को तो चेंज जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर हैं उनको करना पड़ेगा. अच्छा. आज ये ब्रांड भी जो है वो एक दिन में थोड़ी तैयार हो गए. ये सब जितने भी फॉरेन के ब्रांड देख रहे हो, कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है. सो ब्रांड इज नॉट मेड इन वन डे. इट टेक्स years, generations. And for that you have to spend money. You have to make extraordinary product. Then only you can do so. Extraordinary product with low prices. Yeah, but in the beginning, of course, it will be little low. आज मान लो तुम्हारा ब्रांड बहुत फेमस ब्रांड है और तुम्हारा जूते की एक क्वालिटी है, मैं उससे 21 क्वालिटी बनाता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे जैसा प्राइस नहीं ले सकता. True. Because people has to know your brand first. So that takes time. And as you go on, your price will start increasing. आज इंडियन ब्रांड में भी, आज मान लो 4 टॉप ब्रांड है, उन चारों की प्राइस में भी डिफरेंस है. जो ज़्यादा फेमस है उसका प्राइस ज़्यादा मिलता है. सर, मयूर में आपने 20-25 साल के बच्चों को एम्प्लॉय किया हुआ है, मतलब आपके पास सभी तरह के हैं बच्चे.
अच्छा। हाँ हाँ, तो 20 साल से लेके 60 साल तक है। तो उनका जो 20 से 25 साल का ब्रैकेट होता है, ये कैसे डिफरेंट, उनकी सोच क्या डिफरेंट होती है जो आपके 60 साल के एम्प्लॉयज़ की से इनकी सोच क्या डिफरेंट होती है? देयर इज अ बिग डिफरेंस। अच्छा। आज जो आदमी 20 साल 25 साल से काम कर रहा है, उसका दिमाग बस खाली वहीं दौड़ता है। हम्म। अभी सिंपल बात बताता हूँ तुमको। आज एक कंपनी चल रही है, मेरी कंपनी चल रही है, उसमें लोग बाग काम कर रहे हैं इतने सालों से। अब तुमको मैंने भेजा कि बेटा जा देख जरा, इस डिपार्टमेंट को देखते रहो क्या समझ में। तुम आधा घंटा रहोगे, तुम कुछ न कुछ चीज़ निकाल लोगे उसमें से कि दादू ये करें तो कैसा रहे, वो करें तो कैसा रहे। तो क्या है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। जो एक चीज़ को देखते हुए चलता है वो उसको वही दिखता है, बाया नहीं दिखता। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो यंगस्टर आते हैं हाँ। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट नाउअडेज, अच्छा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। हम लोग अपने ज़माने में कुछ भी नहीं थे। हम तो यहाँ तक पहुँचे हैं कड़ी मेहनत से, लगन से, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में जो है, कहावत है ना, नेवर गिव अप। हाँ। आज मेरी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव हुए। ये फैक्ट्री मैंने स्टार्ट की 93 में, एंड दैट टाइम आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु बॉट होल प्लांट फ्रॉम इटली। अच्छा। आई गॉट एन R&D मैनेजर फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब उस जमाने में जो मशीनें थी उससे कम से कम 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट दे के मैंने मशीनें खरीदी। कौन करेगा हिम्मत? सही बात। एक ट्रेडर है जो, अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं थी मैन्युफैक्चरिंग की, दिमाग में भूत सवार था। हाँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने पब्लिक लिमिटेड की। यू विल सरप्राइज कि मार्केट से पैसा लेना था। हाँ। और लकीली 93 में मार्केट वाज गुड। ओके। मेरी जैसी कंपनी का हाँ। IPO 4 टाइम ओवर सब। ओवर सब्सक्राइब हो गया। क्योंकि उस समय होता है ना, मार्केट में एक समय रहता है डाउन का, रहता है एक समय नई नई इकोनॉमी चल रही थी और थी, सब कुछ कर लिया, इतने बड़े खर्चे पाल लिए। और प्रॉब्लम क्या थी उस समय कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं था इंडिया में। अरे भाई, दे वर नॉट यूज टू सी द प्रोडक्ट। इंपोर्ट तो होता नहीं था ज़्यादा, कैसे देखोगे तुम? कैसे देखोगे? सही बात है। बाहर के प्रोडक्ट नहीं है, बाहर लोगों का जाना आना नहीं था इतना, इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट भी नहीं था, ये सब नहीं था, तो कैसे आइडिया लगे? सही बात। तुम बिलीव नहीं करोगे, 4 साल बाद मेरी ये हालत हो गई थी कि मुझे कंपनी बेचनी पड़ेगी। खर्चे तो आसमान में थे सारे, और प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिकना भी तो चाहिए। हाँ। अच्छा, बता दिया मेरा प्रोडक्ट B2C है नहीं, हाँ। B2B है। हाँ। तो तुम जूता बना रहे हो हाँ। तो डिज़ाइन तो तुम ही बनाओगे ना। हाँ। मैं तो खाली बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट दे सकता हूँ। हाँ। आज कोई भी चीज़ बनाते हो उसमें कई सारे चीज़ें चाहिए। आज मान लो बैग है, लेडीज़ बैग, पर्स है समझो। पर्स में क्या होता है? रिंग होती है, वो क्या बोलते हैं, लॉक होता है, जीप चेन होती है, एक्सेसरीज भी तो होती है। खाली हम लेदर क्लॉथ बढ़िया लगा दें और वो एक्सेसरीज का समन्वय नहीं करें तो आपका माल नहीं बिकेगा। आप कितना ही बढ़िया लेदर क्लॉथ तो लगा दें। आप कह रहे हैं कि टर्शियरी सेक्टर भी डिपेंडेंट है सेकेंडरी सेक्टर पे, मतलब जो रिटेल कर रहे हैं, और अगर वो ढंग से अपने प्रोडक्ट को ना बेचे और उनका माल ना बिके तो फिर सेकेंडरी सेक्टर भी कैसे बिकेगा? हाँ, तो वही हुआ ना। हाँ। तो मेरी तो ये हालत हो गई थी, लेकिन संजोग से मैंने कहा चलो यार 1 साल और खींचते हैं। हाँ। उस समय 91 में हाँ। मनमोहन सिंह आया था हाँ। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। ओके। उसने इकोनॉमी ओपन की इंडिया की, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। तो दुनिया भर के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आने लग गए। ओके। तो लोगों को दिखने लगा कि क्या है, तो उसकी डिमांड होनी शुरू हो गई। तब 97 से
मेरा चालू हुआ। फर्स्ट टाइम स्पोर्ट शू आया था इंपोर्ट होके ताइवान से। हाँ वाइट मटेरियल का स्पोर्ट शू आता था, हाँ। वो आर्टिफिशियल। अच्छा। दैट टाइम वी वर ओनली कंपनी हु हैज मेड दैट मटेरियल इन इंडिया। दैट्स ग्रेट। और 97 में यहाँ का जो टॉप फुटवेयर मैन्युफैक्चरर और सेलर था, उसने मेरा मटेरियल लेके आने के लिए उस जमाने में 1 करोड़ रुपए एडवांस दिया था। कैन यू इमेजिन इन 97? क्योंकि नई चीज थी। सही बात है। तो दिया उसने, और मैंने कूटे जम के पैसे। तुम बिलीव नहीं करोगे, उस प्रोडक्ट की 97 में जो प्राइस थी और उस जमाने में जो रॉ मटेरियल का प्राइस था, आज उस सेम मटेरियल का प्राइस तुम समझ लो 25-30% ज़्यादा है सिर्फ। जबकि रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक ही चीज़ सीखी है लाइफ, हाँ। कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको यू हैव टू गो आउट ऑफ वे, यू हैव टू कंफर्ट जोन से प्रोड्यूस निकलना है। समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट मेड बाय एनीवन। मैंने आज के 35 साल पहले जैक वेल्च का नाम सुना है? सॉरी? जैक वेल्च नहीं। जीईसी कंपनी का सीईओ था। उसकी किताब मैंने 35-40 साल पहले 35 साल पहले पढ़ी थी। ओके। उसमें लिखा था उसने that if you want to make money, you have to be number 1 in your product or maximum number 2. तो सभी कमा लेंगे। वो चीज मेरे को आज तक है। देख लो, हाँ जितने भी टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, हाँ। जो प्रोडक्ट उनके नए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू ऑलवेज इन्वेंट, इनोवेट। जमाने में क्या था कि आपने एक नई चीज़ इनोवेट की, 2 साल 3 साल आपको मकर लगा लेते थे। आजकल द वर्ल्ड इज सो फास्ट दैट यू प्रोड्यूस समथिंग टुडे, विद इन 6 months यू विल सी दैट देयर इज अ प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट which public will get in the less price. That means you have to continue innovating. समझे कि नहीं? आज के दिन ये है कि तुमने एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में दिया, तो ये समझ लो वो मैक्सिमम 6 महीने साल भर, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आपको बैक में नया प्रोडक्ट रेडी करके रखना पड़ेगा, डेवलप करके रखना पड़ेगा। आज अगर मैं एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ तो 2 प्रोडक्ट और मुझे तैयार रखने पड़ेंगे, बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग सो फास्ट। तो सर, नाउ मूविंग ऑन टू अ फाइनल सेगमेंट, तो आप एक ऐसा एडवाइस क्या होगा जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हाँ। नंबर 1 तो बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़ो। ठीक है। बी प्रैक्टिकल। ओके। कोई भी चीज़ ऐसे चुटकी बजाने से काम नहीं होता है। ठीक है। आज के दिन यंगस्टर को ये प्रॉब्लम है कि आज मैंने काम शुरू किया, कल ही मैं अरबपति बन जाऊँ। पेशेंस। आज मैं 62 से काम कर रहा हूँ, 78 साल का हो गया। ये पिछले 10 साल में ही तो हुआ जो कुछ हुआ। तो दैट मीन्स नेवर गिव अप। जो कहावत है ना, इतने अप एंड डाउन आए मेरी लाइफ में, आई नेवर गिवन अप। ऐसे तुम बताया ना, मैंने तो कंपनी बेचने लग गए थे। और जब मैं ट्रेडिंग करता था, मेरे मौसी का लड़का मेरा पार्टनर था 50%। और जब मैं मैन्युफैक्चरिंग में गया तो मैं तो पागल हो गया, डूबेगा। तो ट्रेडिंग में अच्छा नाम कर लिया था हमने, तो बोला मैं तो जा रहा हूँ। तो मुझे तो उसका भी 50% पैसा देना पड़ा। सोचो क्या हालत हो गई थी। मैंने कहा नहीं करूँगा मैं तो। होता है जब आदमी
स्ट्रिक्ट हो जाता है, मन में ठान लेता है, तो रास्ता अपने आप निकलता है। अच्छा। ये कहावत है, टू गेट सक्सेस यू शुड हैव फायर इन योर बेली। दैट्स राइट। कि मेरे को ये करना ही है, सही कह रहे हैं। और डिसअपॉइंट नहीं होना है। हम्म। जनरली क्या होता है, लाइफ में क्यों फेल हो जाते हैं? यार बहुत चेष्टा कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है, अब कुछ नहीं होगा, हम लोग गिव अप कर देते हैं। हाँ। आज जो ऊपर चढ़े हैं उनका सबका लाइफ हिस्ट्री निकाल के देखो। पैदाइशी अरबपति करोड़पति लिमिटेड लोग थे, हाँ। सब नीचे से ऊपर उठे। सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वी शुड नेवर गिव अप व्हेन वी आर फेल्ड। ओके। तुम जब फेल हो गए ना, तभी तुमको पता लगेगा, उसका कारण ढूंढोगे। आज मेरा प्रोडक्ट नहीं चला, हाँ। एक तो मैंने गिव अप कर दिया, हाँ। एक मैं उसके पीछे लगा कि यार क्यों फेल हुआ, क्या कमी थी, क्या था, रास्ता ठीक निकलेगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। हाँ, दैट्स ट्रू। उस पर रिफ्लेक्ट करोगे। सो आज का सेशन वाज रियली really insightful with you. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on Genflation. We have more exciting panels coming only for you. So tune in. Genflation is here, the next gen narrative.